South Asia is among the world's most densely populated regions. About 1.5 billion people live here. That's about a quarter of all the people in the world. It is a land of spirituality and philosophy. The most dominant religion is Hinduism, followed by Islam, Christianity, then Sikhism. CVC The Voice Asia is one of the many radio stations owned by Christian Vision Corporate. The Voice Asia is a contemporary radio station transmitting mainly to South Asia on shortwave radio via satellite, sending live transmission from the UK. The programs play a mixture of music and features which are informative, educational and entertaining, including features which teach family and biblical values. The aim is to fulfill the mission statement of CVC via radio. The Voice started transmitting in June 2002, starting with a single 3-hour program per day, and has expanded at a fast rate. In August, The Voice expanded to 6 hours. In September, we expanded to 9 hours of live broadcast on shortwave radio and 24 hours a day on the internet. As the hours expanded, so did the responses. Postal boxes were opened to accommodate letters from our listeners. In November, our first postal box was opened in Kangra, Himachal Pradesh. In April 2003, we expanded to 12 hours, starting with the early morning breakfast program. In June, we expanded to 15 hours. Also in June, our second postal box was opened in Ludhiana, Punjab. In September, The Voice expanded to 16 hours of live broadcast on shortwave radio. Also in September 2003, the SMS text messaging system was introduced. Then, in July 2004, an interactive radio phone system was introduced. In February 2005, The Voice held its first roadshows in Ludhiana and Chandigarh in the Punjab. They were a huge success. 8,000 people attended each roadshow and approximately 3,000 people came forward when the altar call was given. This was the first publicity campaign done for The Voice Asia. In July 2005, The Voice Asia went on digital radio in the UK for a 3-month trial period only. This was a success despite the misunderstanding Asian Christians have in the UK about evangelism. The Voice will be transmitted on digital radio when a popular medium such as DRM is in mainstream circulation. In August 2005, The Voice Asia held its first convention in Birmingham, UK. About 800 people attended the event, mostly Asian Christians from all over the United Kingdom. This event publicized The Voice Asia amongst the Asian Christians in the United Kingdom and re-educated many about using radio for evangelism. In October 2005, The Voice held another set of roadshows in India, this time in Jalandhar and Dhariwal. There was a lot of opposition to the roadshows, especially in Jalandhar, from 2 Hindu committees. This escalated amongst the Asian activist movements and caused more unrest as the roadshows approached. Consequently, this led to clashes and riots between all parties. About 2,000 people attended each roadshow. The majority were our listeners. There were very powerful testimonies at the Dhariwal roadshow. In December 2005, we opened our third postal box, which is in Rawalpindi in Pakistan. Due to the increase of contacts and the huge demand for prayer requests, in May 2006 we had our first open day at the head offices in UK, where we encouraged many to join us in this great harvest. "80% of our listeners are non-Christians. Many have tuned into the station because of the entertainment value and then come to a saving knowledge of Jesus Christ. A numerous amount of our listeners have asked for prayer and have seen the power of God working in their lives." नाम मेरा ईसरी है, पिंड बप्पा से, जिला सिरसा, हरियाणा। रेडियो डुबोइस थे, 3 साल हो गए मेरे को सुनते को। मेरे घर में बहुत दुख तकलीफ थी। मेरा घर वाला पीता खाता था,
मारता पीटता था। मैंने रेडियो पे तौबा करी, वहाँ से मेरे को सुख शांति मिली। पिता परमेश्वर मेरा हमको बहुत बहुत सुख शांति दी हमारे घर में। हमारे घर में ऐसा था भी हमारे खाने को हमको रोटी नहीं मिलती थी, जम्मा रोटी। तेरे मेरे घर लस्सी ले आती थी मांग मांग के, वैसे मैंने बच्चे जवान करे हैं लस्सी पिला पिला के। हफ्ता हफ्ता पर हमको रोटी नहीं मिलती थी। पिता परमेश्वर मैंने जब सुना डबोई, मैं डबोई सुनने चालू कराया। जैसे जैसे मेरे हाथ में माड़े मोटे पैसे आए, एक दो बारी मैं प्रार्थना करवाई। उसी प्रार्थना से पिता परमेश्वर हमारे घर में इतनी सुख शांति दी है, आशीष बरकतें भी दी है। उसी दिन से मेरे पिता परमेश्वर में तो मानने लग गई। मेरे बेटे को काम से हटा दिया था, लगा था पहले, हट गया फिर काम से। फिर मैंने एक बार अपने संजय कर टेलीफोन करके मैंने प्रार्थना करवाई। दूसरे दिन मेरा बेटा काम पे लग गया, वो भी मानने लग गया भी ना मम्मी भी अपना है पिता परमेश्वर। सुखदेव सिंह है, जिला गांव सिकंदरपुर, जिला सिरसा, हरियाणा का मैं रहने वाला हूं और मैं एक बागड़ी परिवार से हूं। मैं पहले बहुत परेशान और दुखी था। मेरे माता पिता जी चर्च में जाते थे, मैं उनसे लड़ाई करता था और उसकी तरह उनसे बहुत लड़ाई करता था। तो उसके बाद मुझे टीबी की बीमारी हो गई। उस बीमारी से बहुत परेशान हुआ। 6 महीने मुझे लगातार बुखार रहा। उस बुखार ने मुझे बहुत परेशान किया। उसके बाद मैं बहुत से सियानों के पास, डॉक्टरों के पास, बाबों के पास गया, मुझे कोई आराम नहीं मिला। उसके बाद जैसे जैसे मैं चर्च में जाने लगा और मेरे प्रभु ने अच्छा कर दिया, मेरी वो टीबी की बीमारी और वो सब कुछ दूर हो गया। और सबसे ज़्यादा मुझे रेडियो ने ही बदला है, मेरा जीवन रेडियो ने बदला। आज मेरा पूरा परिवार जो है रेडियो सुनते हैं, प्रभु में चलते हैं। और मैं निशान सिंह नत्त, पिंड मकोड़ साहब, जिला संगरूर का रहने वाला हाँ। मेरा बीपी बहुत हाई रहता सी। मेरा बीपी 220/140 ਹੁੰਦਾ ਸੀ। मैं बहुत दवाई ली तो मैंने कोई आराम नहीं आया। एक दिन मैं दुबई रेडियो सुनिया तो उत्थे मैं प्रार्थना करवाई। प्रार्थना करवाने तो बाद मैनू मतलब आराम आना शुरू हो गया। फिर मैं लगातार 4-5 बजे प्रार्थना करी, जिथे कि मैं दिन के 3 बार दवाई खाता सी। फिर मैं 2 बारी खानी शुरू की। उस तो बाद फिर मैं मतलब एक दिन खानी शुरू। हुण मेरे को बिल्कुल दवाई बंद की हुई है जी। मैंने पूरा विश्वास है प्रभु जी से, मैंने उन्होंने बहुत फायदा किया है। मेरे ना कांता आ, असीं सरसे हरियाणा के रहने वाले हाँ। पिंड साडा बप्पा आ ते 4 मेरिया कुड़ियां आ। एक ही मेरा मुंडा वड्डा है कमाउण वाला, एक तो छोटा है 5-6 सालों का है। ਉਹਨੂੰ पता नहीं था कोई भूत प्रेत चिमड़ गया, पता नहीं कोई दिमागी टेंशन पै गई तो असीं हस्पतालों च लै के भज्जे फिरे। सन तां रोटी ना मिले खाण नूं, बच्चे भुखे मरे। फिर साडे गवांढण सीगी, नौं लगदी सी साडे, उन्हां ने सानूं राह दिखाया। वो रेडियो सुणदी सी डिवाइस ते, उन्होंने आख्या भी तुसीं परमेश्वर दा नाम लो तो परमेश्वर आपां चंगा करेगा। फिर असीं 2 बारी असीं प्रार्थना करवाई डिवाइस वाले तो हुण परमेश्वर की दया नाल धन्यवाद करते हैं प्रभु का। तो हुण मुंडा साडा ठीक है। मैं जी SK मेहता हूँ अमृतसर से। और मेरे माता जी बहुत बीमार हो गए थे और मैंने अचानक BBC लंदन सुना तो मुझे पता चला यहाँ पर प्रेयर भी होती है। तो मैंने प्रेयर करवाई नीलम जी से, तो मेरी माता जी बिल्कुल ठीक हो गए। मेरी माता जी को रोज़ तकरीबन 30-35 उल्टियाँ आती थी और उनको हार्ट ट्रबल भी है और भी ब्लड प्रेशर भी है, कई किस्म की शुगर भी थी उनको। जब से मैंने उनकी प्रेयर कराई है तब से बिल्कुल ठीक ठाक है और मैं अब यीशु मसीह को मानना शुरू कर दिया है। और मेरे को इतना विश्वास हो गया है कि जो मैंने प्रेयर करवाई है उसी की वजह से ही मेरी माता जी ठीक हुए हैं। और उसके बाद मेरा एक बड़ा भाई है, उसको भी एक यहाँ पर एब्सेस हो गया था और वहाँ उसको हॉस्पिटल में दाखिल कराया गया। तो डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। उसके बाद उसका ट्रीटमेंट चलता रहा। मैंने नीलम जी से प्रेयर करवाई उनके लिए भी, तो वो मेरा भाई भी अब बिल्कुल ठीक ठाक है। वो काम पर जाना शुरू कर दिया उसने, अब उसको कोई भी तकलीफ़ नहीं है। और मैं अब यीशु महाराज जी के चरणों में लगा हुआ हूँ और मैं रात दिन उनके गुणगान गाता हूँ। और मैं जब से यीशु मसीह को मानना शुरू किया है तब से मैं ज़िंदगी में बहुत खुश हूँ। The responses we are receiving via email, letters, phone calls and text messages are growing rapidly. In 2002, from June onwards, when we first started our broadcast, we received 902 emails. In 2003, it went to 24,998 responses. In 2004, the responses nearly tripled to 71,089. In 2005, there was a huge increase to 136,294 responses.
approximately 50% of our responses are prayer requests. So there is a big need for us to pray for our listeners' requests. We need prayer partners and prayer warriors. Prayer partners will be able to pray from their homes for the prayer points which you can find on our website. In addition, voluntary prayer warriors are needed to pray in the Power House, which is our prayer room based at the head office in UK. We need you to intercede for our listeners' prayer requests, which will be taken by our telephone answerers and presenters. If you can speak Hindi, Punjabi or Urdu, then you could help by answering the phone calls from our listeners. This will involve prayer and counseling on the phone to the callers. RDS is an internet-based system designed to monitor the development of responses we have from our listeners. It also enables us to maintain contact with our listeners and build a friendship with them, similar to a pen pal. This friendship is built by voluntary missionary helpers who can work from home via the internet. All missionary helpers will be supervised by the RDS supervisor, who will monitor the progress between the missionary helpers and listeners.